Hello guys, welcome to my 30 days gold trading journal series. So in this series जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया गया था, so just आप लोग एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा. So basically in this series what I am going to do is that I will be sharing my real gold trade ideas. मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, जो भी सेटअप्स में मैं ले रहा हूँ, so at the end of the day I'll be sharing you guys what is the outcome of the systems that I have been using in this market, right? So please go through the video once. अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा तो आप लोग उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अबाउट दिस 30 days सीरीज. ठीक है, सो टुडे बेसिकली इज द डे वन ऑफ दिस सीरीज. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं कि आज के हम लोगों ने क्या सेटअप किया था, क्या प्लान किया था, किस तरीके से एग्जीक्यूशन आया, एंड एट द एंड ऑफ द डे कि व्हाट वाज द रिजल्ट, राइट? So coming to the first system, basically I trade with four systems in this market. मैं चार systems के साथ काम करता हूँ मार्केट में, and the pair I trade is only gold. तो first जो system है that is the bank zone system, and today what I was observing is the bank zones were already marked. अगर आप ये देख पा रहे हो, the dark blue color जो आप देख रहे हो, this is a bank zone, basically weekly bank zone. So market अगर आप देखोगे break किया था, so pull back, so there was an entry over here and I took a trade. The risk reward I was going for is 1:2. एक सेकेंड. 1:2 के लिए रिस्क रिवॉर्ड आई गो फॉर ट्रेड्स विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. लेकिन क्या हम करते हैं कि 1:1 पे वेन एवर द ट्रेड हिट्स द 1:1 हम उसको ब्रेक इवन पे सेट करते हैं, मतलब रिस्क फ्री कर देते हैं. वी क्लोज 50% ऑफ आवर पोजिशंस एंड वी होल्ड द रिमेनिंग 50%. सो दिस ट्रेड अगर आप देख सकते हो 1:1 अपना हिट हुआ था एंड अल्टीमेटली ये एक ब्रेक इवन ट्रेड गया. सो 0% ऑन दिस, आई वुड से दिस सिस्टम, बैंक जोन सिस्टम. सो कमिंग टू द सेकेंड सिस्टम, बैंक जोन सिस्टम ही बट इन ए रिफाइंड वे. सेम पेयर जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड, आई ओनली ट्रेड गोल्ड, राइट? सो बेस्ड ऑन दी सिस्टम्स ये हम लोगों ने जो है अपना जोन्स को मार्क करके रखे हुए थे. और अगर आप ये देख पा रहे हो, दी orange color is the new work sessions. So my trading window is only this. उसके अलावा मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज नॉट ऑफ माई कंसर्न. ठीक है, एंड आप लोग भी यही चीज़ कीजिएगा. मतलब यू डोंट हैव टू सी ऑल द कैंडल्स, ऑल द मार्केट, एवरीथिंग, बिकॉज राइट वी नीड ओनली अ पीस ऑफ दिस मार्केट, राइट? दिस इज हाउ आई अप्रोच द मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है एक ब्रेक मिला था अपसाइड, तो पुल बैक एंड कन्फर्मेशन. सो मेरा सेटअप यहाँ पे अपेयर हुआ था. सो आई रिस्क 1%. आई इन एवरी सिस्टम आई रिस्क 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो, राइट? और मेरा यह जो रिस्क रिवार्ड था, आई वॉज गोइंग फॉर ए 1:2.2. आप बेसिकली समझ सकते हो 1:2.2 के अराउंड में रिस्क रिवार्ड के साथ जा रहा था, एंड दिस हिट माई एस एल. सो -1% ऑन दिस सिस्टम. Coming to my third system, that is the Fibonacci levels. Again, mechanical systems है ये भी. Mechanical systems means I only denote, I would say, 5 minutes of my day to set up the limit orders. ठीक है, and it's a fixed risk reward trade. मतलब fixed मतलब either it will hit my SL or it will hit my targets, right? So यहाँ पे ये टैप इन हुआ था ऑर्डर. फिबोनाची लेवल किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं इतना मैं इन डेप्थ नहीं जाता हूँ. जस्ट ये डेली जोन्स पे ही इसको ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, डेली जोन्स पे इस फिबोनाची लेवल को जो ड्रॉ किया जाता है, एंड इस सिस्टम में वी ओनली नीड द डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, और एंट्री के लिए वी गो फॉर द 5 minutes. नो बायस इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड. वी जस्ट नीड टू सेट द बाय स्टॉप एंड द सेल स्टॉप ऑर्डर्स. The buy stop and the sell stop orders with a risk reward ratio of around 1:2.4 के अराउंड आपको मिल जाएगा. 2.4 के अराउंड आपको यहाँ पे 1:2
आपको दोनों साइड जो है स्टॉप ऑर्डर सेट करने होते हैं, and once if one side gets tapped you have to close the opposite one, right? So that is basically how this system works. Mechanical system, pure mechanical system, यहाँ पे कोई subjectivity नहीं होता है, and the best part of a mechanical system is that when there is no subjectivity in the market, तो ज़्यादा changes variables नहीं आते हैं, right? बिकॉज मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं देखना पड़ता, राइट? सो इट टैप्ड एसएल। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा ट्रिगर हुआ था, फिर ये एसएल टैप हुआ, फिर उसके बाद लेकिन ये टारगेट दे चुका था, राइट? सो दिस हैपन्स इन द मार्केट, राइट? दिस हैपन्स इन द मार्केट। नाउ व्हाट ए बिगिनर ट्रेडर विल डू इज दैट वंस इट हिट एसएल इट विल डायरेक्टली गो फॉर बाइस, राइट? वही होता है ना, दिस इज हाउ द सर्वाइवल सबकॉन्शियस माइंड कम इन टू प्ले, राइट? सो ये चीज़ है, राइट? सो you only need to understand that the only thing that you can control in this market is your control behavior in this uncontrolled environment, right? You need to have a set of rules, you need to have a system, and you just need to execute the system and let the system play. You don't have to worry about the results. If the probability is in your favor, you will make money, and if the probability is not in your favor, you cannot make money. Simple, right? So यहाँ पे भी एक SL टैप हुआ तो -1% एज वेल, एंड डेली जो स्विंग सिस्टम है उसमें जो है आज कोई सेटअप अपीयर नहीं हुआ था, राइट? आई बिकॉज आई एम लुकिंग ओनली फॉर बाइज इन दिस स्विंग। सो यहाँ पे आज कोई जो है अगर आप देखोगे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था, देयर इज नो बुलिश कैंडल, आई नीड ए बुलिश कैंडल फॉर कंफर्मेशन इन दिस सिस्टम, राइट? सो द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट आई वुड से, एंड इन दिस ये मतलब आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में बोल लेता हूँ, देन आई विल टेल कि व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 30 days इन दिस सीरीज, ठीक है? So end of the day report, if I would say, three systems were triggered because there was no, I would say, trade on the daily swing system. Three trades basically, and two SL, one break even. So some of my students go for fixed 1:1 as well in this bank zone system. I would say daily intraday bank zone system, and उनका जो है 1:1 आई वुड से जो लोग जा रहे थे उनका टीपी भी मतलब हिट हुआ है, राइट? सो इट्स ऑल बेसिकली हाउ यू मैनेज द ट्रेड, राइट? आई गो फॉर ए 1:2, सम गो फॉर 1:1, सम गो फॉर 1:2, राइट? तो इट हैपन्स, बट द थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी टू हैव इन योर फेवर, आप जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो उसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 बार ये वर्क नहीं कर रहा है फिर आप उसको जो है नहीं कर रहे, राइट? सो total I would say for today it's a -2% for the end of the day, ठीक है? -2% for the end of the day. Let's see, this is the day one of this series, and as I have already mentioned in my last video as well, this is a series where I'll be only and only be focusing guys on process, right? The motive of making this series, as I would say, is to show you how to become a profitable trader. What is the process, I would say, what are the things that you need to follow in terms of your psychology. If you see in YouTube, there will be endless channels, endless videos which will show you the strategy how to become profitable, right? The system how to become profitable, the strategy, I would say, the strategy how to become profitable. So I am not showing you the strategy how to become profitable, I am showing you the process how to become profitable, because strategy is just the 20%. So in this series I'll be journaling each and every trades, so I'll be showing you everything as well. If you see, this is the bank zone, daily bank zone, which is a break even, and the refined version of the bank zone strategy, the second system, it's an SL, right? Stop loss, daily swing, there is no entry today, no setup today, and the Fibonacci buy stop sell stop is also SL. So -2% for the starting of the week. Very, I would say, it would be a great week, I would say, because many beginner traders fail on Monday itself.
the Monday decides your entire how you will be trading up till Friday, because it sets up, I would say, your motivation for the entire month, entire week, right? And Monday for beginner traders, when they are in a drawdown, they, I would say, they are much prone now to take decisions, I would say, from the opinion base rather than objectivity, right? So I won't be making such a long video, right? I'll be cutting it short. So day one completed, guys, and profit or loss, as I've already mentioned, doesn't matter. What matter is whether I followed my rules or not, right? So if you're serious about your trading journey, if you really are thinking, if you're someone who thinks in long term, right? So please, I would say, join, follow the series, and let's improve together, right? See you on day 2 tomorrow. Thank you so much, guys. Thank you for joining, and please do subscribe to the channel if you think this could be beneficial for you. Do like and subscribe as well. Thank you, guys.